अच्छा भाई, अच्छा तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? इट्स द वर्क डन पर यूनिट मास, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, per unit mass in bringing that mass from infinity to a certain point in space. अच्छा again it's a vector quantity. अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं तो दैट्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. its unit is joules per kilogram. ठीक है ना? Gravitational field strength is a vector quantity as again, because you have Fg as your vector quantity. अच्छा जो gravitational field strength है ना, that's again it's measured in newtons per kg. Gravitational force is measured in newton. All right. Gravitational potential energy is measured in joules, and gravitational potential energy is measured in joules per kilogram, and it's a vector quantity. Remember, gravitational potential energy vector quantity नहीं है, क्योंकि work done positive negative जो है ना, that's not because of the direction. That is actually because of the it's not about in which direction the object has been displayed. It's because of the direction of the energy transfer. जो आपका work done के अंदर जो negative positive आता है, that shows the direction of the energy transfer. Gravitational potential is a vector quantity, so you can write down as work done by the gravity on m, that is the gravitational potential energy per unit of mass, minus gmm over r. अच्छा, minus gmm over r is the gravitational potential energy divided by per unit of mass, divided by mass. So it's going to be minus gm over r. All right, where r is actually is the separation between the point at which the the position of the object and the point of reference. जो भी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आपकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, उसकी वो जो सेपरेशन होती है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, दैट्स व्हाट आर इज. explained it to you before as well. The point of reference is the center of the earth to the position of the object in the gravitational field. That's what we have as R. इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है, ठीक है ना? अच्छा, in mathematics, अगर मैं in terms of mathematics बात करूं, explain करूं आपको, so gravitational field strength is equal to the gradient function of gravitational potential. ठीक है ना? अच्छा, अब ये gradient function क्या होता है जोआ, ये तो आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको बैकग्राउंड नहीं पता. अरीबा, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझ जाएंगे जैसे मैं समझाऊंगा. यार अरीबा, जैसे आपके पास जी है ना, जी इज व्हाट, सॉरी, अच्छा, gravitational potential is denoted by this form is we call as phi. ठीक है ना? अच्छा, जो gravitational potential is minus gm over r. ठीक है ना? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं अरीबा विद रिस्पेक्ट टू r, तो gm तो चलो कांस्टेंट है, gm तो कांस्टेंट है. अगर आप डिफरेंशिएट करें -1 ओवर r को, तो ये r की पावर -1 हो जाएगी, -1 नीचे आएगा, r की पावर -2 हो जाएगी, यानी इट विल बी gm ओवर r स्क्वायर. एग्रीड और नॉट मिस अरीबा? हाँ, तो व्हाट यू हैव डन इज कि अरीबा, मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फंक्शन है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया. So I've got gm over r square, and that gm over r square I know that is equivalent to g. And so that's why I've written it down. That's why I can say कि आपका जो gravitational field strength है, that is equivalent to the gradient function of the gravitational potential. यानी gravitational potential function का जो gradient function है, जो कि differentiate करने से आता है, so g is equivalent to that. And so I can write down this g as equivalent to d phi over dr. Okay, we are differentiating phi, that is potential, with respect to r. So g is equivalent to d phi over dr. Is it clear, Ariba, or not?
ठीक है? Yes, sir. And Zoha, what you have to remember is you don't have to do all this. First of all, so you have been just asked that what is the relationship between gravitational field strength and gravitational potential. So you can write it down. Gravitational field strength is equivalent to the gradient function of gravitational potential, and you can just write down this mathematical equation. Problem is that you need to have a background of differentiation to understand that what is the gradient function and what is the operation of differentiation. That's what you need to understand. But of course, that's not part of curriculum, and that needs a lot of detail. And of course, it's again a lot of things you have to understand. So I'm not going into that detail. What just your knowledge? What you should have the knowledge about is कि आपके पास gravitation field strength है that is equivalent to the gradient function of the gravitation potential, and you can just write down this mathematical equation. ठीक है ना? Just like you have integration as the operation, this is plus minus multiplication division. ऐसे आपके differentiation and integration are also two operations that you perform. ठीक है ना? अच्छा, now let's move on to escape velocity. Escape velocity is at the position. Now let's talk about escape velocity. So at the position where you are standing, okay, at the position where you are standing, the mechanical energy E is given by this. अच्छा, कोई किसी भी point wherever you are standing at any point, either within the earth or outside the earth, ठीक है ना? So you can encapsulate all that into a space. You can just think of whenever you are at any point in space, you can like within the earth or outside the earth. So your mechanical energy at the position where you are is defined as the sum of the kinetic energy and the potential energy at that position. And so let's suppose I am at the surface of the earth, all right, over here, not within the earth but at the surface of the earth. And so I'm going to have the mechanical energy at A equivalent to half m VR square, where VR is actually the velocity at position A, minus gmm over r, because from the center to this point of this is your reference and this is your position, so the separation is r, so it's going to be gmm over r. And I have put a minus sign over here because आपकी जो gravitation potential energy होती है वो minus होती है, तो plus minus minus ही हो जाएगा, तो मैंने directly लिख दिया. अच्छा, now at B, your kinetic energy is going to be half mv square, again the velocity at B, where अच्छा यहाँ पे मैं at A, at B, अच्छा, and that is the gravitational potential energy, that's going to be again minus gmm over, now from your point of reference to B you have a separation of r plus r, and that's your total separation between the center and point B. So that's how you have defined, if you have written the mathematical equation for mechanical energy at these 2 points. Now in order to isolate from attraction, I have to move it to infinity. ठीक है ना? What I've done is कि मुझे अगर escape करना है, मतलब if I need to escape the gravitational field or the gravitational attraction of this mass, let's think of this to be an Earth, although it can be any planet, but let's think that to be of an Earth. So that, and why normally we discuss why normally we have one of the masses as planets is actually because in case of planets, because mass is very bigger, so you have the effects, the gravitation effects of gravitational force appreciable. All right, they have you can actually observe, have significant effects of the gravitational force of attraction. That's why we actually have one of the masses as the planets, and just not necessarily Earth, it may be a moon or Earth or any other planet. All right, maybe a sun as well. So now in order to isolate, मुझे अगर escape करना है gravitational field, I have to move it to the point of infinity. That's what
I have taken to be a point. यानी मैं पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी में मूव ऑन कर जाऊंगा तो आई वुड देन एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट और एनी अदर ऑफ एनी प्लैनेट. ठीक है ना. अगर मुझे अट्रैक्शन से स्केप करना है, फील्ड को स्केप करना है, तो आई हैव टू मूव इट टू द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी. अच्छा, आपकी जब भी आप एक पॉइंट से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव करते हैं अरीबा, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी नहीं चेंज होती. ठीक है ना. whether you are within the earth or outside the earth, mechanical energy doesn't change. Yeah, your kinetic and potential energy changes relatively, but your mechanical energy doesn't changes. All right. Especially when you are moving either against gravity or in the direction of attraction. Especially जब आप direction of attraction में move कर रहे हो या against the direction of attraction move कर रहे हो. But simply in other words, जब आप पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन मूव कर रहे हैं, चाहे सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट हो, तो फिर वहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है. ठीक है ना. और फिर आपका जो काइनेटिक और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेटिव चेंज आता है सच दैट कि आपका इनका सम जो है ना वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है ना. हाँ, लेकिन अगर जैसे आप ऑन द ग्राउंड मूव कर रहे हैं तो फिर मैकेनिकल एनर्जी में फर्क आएगा. ऐसा नहीं एक पोजीशन पे जो अगली पोजीशन पे हुई रहेगी, क्योंकि वहां पे आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है ना. लेकिन द थिंग इज के वहां पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो डिफाइन इस तरीके से कि सम ऑफ दीज टू एनर्जीज, तो वहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं आ रहा व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द ग्राउंड. सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा. मैकेनिकल एनर्जी आपके ऊपर नीचे हो जाती है. हालांकि आपका जो टोटल एनर्जी है ना ऑफ द सिस्टम, दैट डजंट चेंजेस, वो तो कंजर्व होगी. लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, फिर चेंज होती है. फिर इसका मतलब नहीं कि आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, ऐसी बात है. अगर ग्रेविटेशनल में चेंज नहीं आ रहा तो काइनेटिक में चेंज आने की वजह से किसी और एनर्जी में चेंज आ रहा हो सकता है. देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स, but that is not going to be incorporated in mechanical energy. Mechanical energy is just purely the sum of gravitational potential and kinetic. So in some cases mechanical energy do get conserved, like when you are especially when you are moving in the direction parallel to the attraction force of attraction, and especially the gravitational force of attraction. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन के पैरेलल आप मूव करते हैं, आइदर द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट, तब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी इफेक्ट आता है. तो फिर वहां आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है. सो राइट नाउ व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, और लाइक even if you move from A to infinity or B to infinity or any point in the direction parallel to the gravitational force of attraction, there's going to be your mechanical energy is going to get conserved. So at both A and B, these two mechanical energy is going to be equal. I've kept them equal. All right. अच्छा, at infinity the gravitational potential energy is taken to be zero. चलो भाई, ये तो मैंने फारिग कर दिया. मतलब I'm taking this second point which I had initially taken to be as point B, मैं इसको point of infinity ले लेता हूँ. अब when we are talking about escape velocity, तो I have to take the final point to be as my point of infinity. तभी मैं isolate होऊंगा force of attraction से, तभी मैं escape कर पाऊंगा ना. तो मैंने ये जो point B की जो mechanical energy है, I've taken it to be at now I'm just replacing it with the mechanical energy at infinity. तो उसमें आपके पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो तो वही जीरो इंफिनिटी पे. अच्छा, नाउ द थिंग इज कि ना, अच्छा अब ऐसा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि अगर मैं मूव करूं इंफिनिटी तक मूव करूं तो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो क्या होगी, कम होगी. ठीक है ना. आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जब आप इंफिनिटी की तरफ मूव करते हैं, इंफिनिटी से नहीं मूव कर रहे, इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो
देखो आप सुने, दोबारा बता रहा हूँ। एक पहले हम डिस्कस कर रहे थे, हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी की तरफ मूव कर रहे हैं, अब हम इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज टुवर्ड्स जीरो, विल इंक्रीज अप टू जीरो। तो ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते होते पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पे होगी जीरो। तो फिर ये ऑटोमेटिकली दिस मस्ट डिक्रीज, फिर ये डिक्रीज होनी चाहिए, यानी इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। होते 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 अच्छा, ऐसा होता नहीं है कि आपकी पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही जीरो हो जाए, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी एक्चुअली रियलिटी में कोई सर्टेन पॉइंट डिफाइंड नहीं है, कैन नॉट बी डिफाइंड exactly that what is the point of infinity. It's just that it's a far point very far away, so that you get isolated from the gravitational field. ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड जरूरी नहीं सिर्फ प्लेनेट की हो, किसी भी हर मास की होती है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे सामने कोई चीज रखी हो, दो मासेस हैं, हम दोनों भी अट्रैक्ट करते हैं, हम दोनों की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, लेकिन अगेन हमारे मासेस ने कहा है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। अगर मैं अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं, उसकी विसिनिटी में अगर किसी मास को रख दूं, अट्रैक्ट नहीं हो जाए भाई, वो मेरा मास इतना कम है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना इतनी सिग्निफिकेंट, इफेक्ट्स आपके अप्रिशिएबल नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जी बोले, जी रीवा बोले बेटा। रीवा कुछ बोल नहीं आप? नहीं सर। कुछ पूछ रही हैं आप? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं पूछना। पूछना है तो पूछिए ना। ओके। है सर मेरे पास कोई सवाल नहीं है, वो बस अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ अरीबा कि आप इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ एट द अर्थ सरफेस काइनेटिक एनर्जी होगी। और अब जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हैं, आपको पता है कि जब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, यू मूविंग अप विद इन द अर्थ भी, अगर आप अपवर्ड्स मूव कर रहे होते हैं, आपकी काइनेटिक एनर्जी गोज डाउन, थ्रो अ बॉल अप। सो ऐसी जब आप इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी मस्ट गो डाउन, कुछ होगी पॉजिटिव वैल्यू आपकी एट द अर्थ सरफेस, नाउ इट्स गोइंग टू डिक्रीज। नाउ एट इन्फिनिटी आई एम assuming it, if I somehow make myself reach point of infinity with zero kinetic energy, although that's not always possible, you will be having some kinetic energy. ऐसा नहीं हो सकता कि point of infinity पे आके बिल्कुल ही जीरो हो जाए, क्योंकि point of infinity कोई एक point certainly defined नहीं है। तो खैर बहरहाल आप यूँ कह लें कि आपकी negligible हो जाए। So I'm just assuming right now just to make my calculations easier. So if I'm assuming it that if I somehow make myself reach point of infinity with zero kinetic energy, maybe zero, then it will be the minimum energy that I would require to escape the gravitational pull of Earth. ठीक है ना? So then I actually can calculate कि जो है ना फिर मेरी velocity क्या होनी चाहिए। What I'm doing right now is I'm assuming कि मैं point of infinity reach करता हूँ with zero kinetic energy, तो ये दोनों तो zero होगा। मैं जी इसको मैं इधर ले आता हूँ राइट पे, तो this going to be equivalent to this। ठीक है, एंड सो यहाँ पे मेरा m और m कैंसिल हो गया, सो 2 टाइम्स g, ये 2 उधर चला गया। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। Now v, this is actually what we call as escape velocity। ठीक है ना, ये escape velocity कहलाती है 2gm ओवरऑल। और अगर मैं इन केस ऑफ अर्थ की बात करूं, if I take my mass, the bigger mass to be as of earth, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को आपने escape करने के लिए अब क्या चाहिए? Now that you need g, you know that the mass of earth is this 6 exponent 24 kilograms, the radius of the earth
is the 6.8 exponent 6 meters. So the escape velocity for the Earth, so that is what going to be equivalent to 11 kilometers per second. Now that's, you can think of that how large that velocity is. 11 kilometers per second is not like, in 1 second you need to travel a distance of 11 kilometers. Now you can think of how fast that is. I need to, throw anything. If you want to make anything escape the gravitational pull of the Earth, you have to throw at this speed. All right. So normally, if you have to like, recently the NASA had made a robot landed on Mars. So of course, then it would have then escaped the gravitational pull of Earth. So in such situations, you need to launch or make the object move. If you are just trying to make it escape the gravitational pull of Earth, the object has to move with the speed, approximately this much velocity to escape the gravitational pull. ठीक है ना? Is it clear or not, Ariba and Zoa? Yes, sir. Achha, there are like, if I talk about Earth, so there are certain orbits around the Earth in which you observe like satellites and space stations revolving. And so that would mean that if you somehow you need to like for in each of the orbit, then agar main Earth ke around jitne bhi orbits hain, if I just wanted to make any, like for example, satellite revolve around that orbit, within that orbit, revolve around the Earth in that orbit. So for each of the orbit, there's some specific speed in order to, like, when you are just launching or projecting any satellite, for example, outside the Earth's surface, but within its gravitational field. So what you do is that we have orbits around the Earth, all right, within its gravitational field, and the satellites move in those circular orbits. So like for moving in any of the circular orbits, the satellite must be launched at some speed, all right, only then it will be able to move in that circular orbit. And when it's going to do so, so we know that in a circular motion, there's going to be some centripetal force acting on it. So we have thousands of satellites that are moving in different orbits within the gravitational field of Earth, moving around it. ठीक है ना? So on all of those satellites, we have the centripetal force of attraction, centripetal force acting on it, of course. And the source of that centripetal force is actually the gravitational force of attraction between the satellites and the Earth. Even if you talk about moon, so moon also revolve around the Earth in an orbit. So moon also does have centripetal force exerted on it by the Earth, and the source of it is the gravitational force of attraction. Similarly, the satellites also, they move around in a certain orbit, and in each orbit, of course, then you can conclude that the magnitude of the centripetal force is going to be different. And of course, then the speed with which the satellites needs to be projected or launched to make them move in a certain orbit is going to be different as well. ठीक है ना? तो क्योंकि जब भी आपकी कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में मूव करती है अराउंड द अर्थ, so it's going to move in a circular motion, so it's always going to have a linear speed, tangential की जो linear speed होती है जिसकी डायरेक्शन होती है tangential to its position. तो वो जो आपकी स्पीड होती है ना, and that is actually constant, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, और वो वही स्पीड होती है जिस स्पीड से आपकी लॉन्च हो, आपकी मतलब
उस ऑर्बिट में मूव करते दौरान जो भी आपकी जो आपकी मतलब यानी कि ये लेट्स सपोज दिस इज एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड if an object has to move in this orbit, when an object is going to move in this orbit, like for example a satellite, so it's going to be have a certain linear speed depending upon its mass. ठीक है ना, उसकी कुछ linear speed होगी जो कि होगी जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल टू इट्स पोजीशन होगी. तो ये स्पीड जो है ना, दरअसल ये वही स्पीड होती है जिससे आपको उस सैटेलाइट या उस ऑब्जेक्ट को उस ऑर्बिट में मूव कराने के लिए लॉन्च करना पड़ता है. तो ये स्पीड होती है ना, लीनियर स्पीड फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन दिस इन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स मास, इसकी डायरेक्शन आपकी टेंजेंशियल होती है टू इट्स पोजीशन. तो इसी स्पीड से दरअसल आपको लॉन्च भी करना होता है उस सैटेलाइट को. ठीक है ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो. सैटेलाइट की बात करें, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. सैटेलाइट को आपको उसी स्पीड से लॉन्च करना पड़ता है, देन इट विल बी ओनली एबल टू मूव अराउंड दैट सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा बात. और ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है मास पे. ठीक है ना, क्योंकि दरअसल आप स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू हैव एफ सी इक्विवेलेंट टू एफ जी फॉर एनी ऑर्बिट, for a satellite moving in any orbit around the Earth within its gravitational field. The source of Fc is going to be Fg. And because I'm interested in calculating the speed with which the object is going to, or the satellite is going to move in that circular part, I'm just interested in finding out that linear speed with which this satellite is going to move in this circular orbit. उसके लिए मैंने यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर नहीं लिया, mv स्क्वायर लिया. ये इसकी भी मैग्नीट्यूड आपकी कांस्टेंट होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है. और जो आपकी v है वो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा. एफ जी एस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, बिकॉज आई एम आउटसाइड द अर्थ, इट्स जस्ट नॉट एम जी नहीं है, बिकॉज आई एम आउटसाइड द अर्थ. द सैटेलाइट इज गोइंग टू बी आउटसाइड द अर्थ, सो just not going to be constant, it's going to be gmm over r square. So mm is going to get cancelled, rr is going to be get cancelled, so v, that is going to be gm over r. Unlike this one, so आपकी escape velocity है, that's going to be, that has to be slightly higher. You have 2 inside it, so that is square root times, यानी आपकी जो escape velocity है, that's square root times of the orbital velocity. ठीक है ना, या velocity to move in a circular orbit, that's the linear velocity to move in a circular orbit. ठीक है ना, ये वो वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी से आपको लॉन्च करना पड़ता है. यानी पहले आप ये कैलकुलेट करते हैं कि जिस ऑर्बिट में मुझे मूव कराना है, ठीक है ना, तो उस ऑर्बिट में मूव करने के लिए क्या, उस ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी. तो वो कैलकुलेट की जाती है एंड उसी स्पीड से फिर लॉन्च प्रोजेक्ट किया जाता है. और कोर्स दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट इज बीन as it has been told by me, or as it seems to be. It's simple नहीं होता, of course, but the basic idea, you can just think of this to be a rough idea. I'm just giving you a rough idea of understanding how things are happening. Yeah, that's one of the key elements that you have to decide with which speed to be launched. Of course, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल exactly वही speed हो, उससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे लॉन्च की जाती है, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू आर विद इन द अर्थ, लॉन्च आपकी सरफेस से नहीं होती, मतलब विद इन द अर्थ से लॉन्च होती है ना. तो अब व्हाइल गोइंग अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आपकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होती है. तो हमें ये जो आपकी वेलोसिटी है ऑर्बिट की, उस ऑर्बिट में जो आपकी सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी उससे ज़्यादा ही स्पीड पे थोड़ी सी हमें लॉन्च करनी पड़ती है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया. ऑफ कोर्स देयर आर लाइक लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, थिंग्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, सो but just giving you a rough idea how things are happening, how things happen actually. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. अज़ान खत्म होने दें. ला इलाहा. अच्छा, ये जो R है,
ये आपका ऑर्बिट का रेडियस है। रिमेंबर कि अगर मैं बात करूं, if the satellite is over here, तो यहाँ पर इवन फॉर एफ जी, अगर आपकी सैटेलाइट इधर है तो एफ जी के लिए जो आर है, इट्स ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। सो दिस आर इज एक्चुअली आर प्लस आर वन। ऑलराइट, जो आर है in this is actually measured from the center to the position of the satellite or the object in the orbit. तो ये r दरअसल आपका ऑर्बिटल रेडियस है, इट्स ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाटएवर। ठीक है ना? सो वेयर r is an orbital radius and v is a minimum velocity। अच्छा, ये है मिनिमम वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी तो आपको चाहिए। वैसे इनफैक्ट इससे ज्यादा ही आप लॉन्च करते हैं, लेकिन ये मिनिमम है। मतलब अगर अब मैं बाकी कंडीशंस से आइसोलेट कर दूं, इफ आई आइसोलेट दैट सैटेलाइट व्हेन इट इज बीइंग लॉन्चेस, जब वो लॉन्च हो रही है सैटेलाइट, तो मैं उसको आइसोलेट कर दूं फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एनर्जी लॉसेस, तो ये तो फिर मिनिमम वेलोसिटी जिससे आपको लॉन्च करना है फॉर मेकिंग दैट satellite or any other object move in the circular orbit, in that particular orbit around the Earth, or any other planet. अच्छा, now interestingly what you can see is कि आपकी ये जो velocity है, that's independent of the mass of the satellite. Initially I told you कि depending on the mass, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, as you see the equation or the formula, you can see that this velocity to move in a circular orbit around any planet, ठीक है ना, it's actually independent of the mass of that object which is moving in that circular orbit. It depends on the mass around which planet you are moving, ठीक है ना, उस planet के mass पे dependent होता है जिसके around आप circular orbit में मूव करें, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं होती है वेलोसिटी। इट्स अगेन वेरी समथिंग नॉन इंट्यूटिव। ठीक है ना? चाहे आप सैटेलाइट लॉन्च करें, इट मे बी ऑफ some satellites are lighter, or you can just launch integrated satellites। अब 2-3 satellites साथ integrate करके launch करें, that will make it heavier, but still if you are launching it in the same orbit, तो आपकी जो speed require है ना वो same ही होगी as far as the course if you are launching it from the earth। ठीक है ना? Is it clear to both of you or not? जी सर, क्लियर है। अच्छा, आपका जो टाइम पीरियड है आपका, क्या होगा टाइम पीरियड? मतलब हर ऑर्बिट का टाइम पीरियड डिफरेंट होगा ना। मून भी एक ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द अर्थ, ठीक है ना, एक ऑर्बिट में मूव करता है मून अराउंड द अर्थ, और इसी तरह सैटेलाइट जो है ना वो भी डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। तो हर ऑर्बिट में मूव करते दौरान जो आपका टाइम पीरियड होता है, ये टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना? तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी नो कि आपके पास when undergoing one revolution, what is going to be the displacement of the satellite or the object is going to be 2 pi r, equivalent to the circumference of the circle upon the linear velocity which is v। so मैंने v को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ gm ओवर r से। अच्छा, ये r की पावर हाफ हो गया, ये r की पावर 1 है, नहीं ये r ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r की पावर 1 इंटू r की पावर हाफ, तो r की पावर 3/2 upon square root of gm। Now this is actually the formula for the time period, ठीक है ना, time period for an object, ठीक है ना, moving in a circular orbit around the earth or any other planet, ठीक है ना। Is it clear, Ariba, or not? जी Ariba? सर। अच्छा, there are some special orbits, ठीक है ना, around the earth, around any planet। आपके जो है ना कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं
that which are called as geostationary orbits. ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं. नॉट ऑल ऑर्बिट्स आर जियोस्टेशनरी बट ओनली सम ऑफ देम. अच्छा भाई, ठीक है. वो ऑर्बिट क्या होते हैं? ठीक है ना. अच्छा, जरूरी नहीं है आपके हर प्लेनेट के अराउंड एक ही ऑर्बिट ऐसा हो जो स्टेशनरी हो सकता है. अगर लेट्स सपोज कोई एक ऑर्बिट है आपका अराउंड अ प्लेनेट जो कि जियो स्टेशनरी है. जियो स्टेशनरी, आई वांट एक्सप्लेन इट इन टुमारोस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है ना, मैं आपको से ट्यूसडे की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि जियो स्टेशनरी क्या होता है. तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, और इस ऑर्बिट को हम जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं, और what happens actually when you make any object, like especially satellites, move around in these orbits, or most of the satellites actually move around the earth in these orbits. आपके पास जो ज़्यादातर satellites हैं वो दरअसल जो आपके अर्थ के अराउंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उनमें मूव कर रही होती हैं. और ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेनेट के अराउंड आपका एक ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकता है मल्टीपल हो, एक से ज़्यादा हो, 2 या 3. लेकिन फिर अगेन उनके दरमियान ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे को. जैसे कि एक अर्थ है, अगर लेट्स सपोज आई एम थिंकिंग ऑफ दिस टू बी एज अ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस टू बी एज अ, अज्यूमिंग दिस टू बी एज अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, तो उसके अलावा अगर कोई और है तो उसके बहुत क्लोज होता है नॉर्मली, तो मच सेपरेशन नहीं होती. तो एज फॉर अर्थ, I don't know exactly how many geostationary orbits are there. There may be like many of them, but yes, there are. And around each planet, you do have geostationary orbits. I'm going to explain what geostationary orbits are. So, you know, so, but I hopefully, आपको ये पता चल गया होगा कि कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें आपके प्लैनेट के अराउंड जब ऑब्जेक्ट मूव होता है, तो you need a certain velocity. You need to launch a project, a satellite or any object, in order to make it move in a circular orbit with a certain velocity. Only then it will be able to move. ठीक है, ट्यूसडे क्लास में हम कंटिन्यू करके ना मैं आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के हवाले से बताऊंगा एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज. जब सैटेलाइट्स आपके जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मूव कर रही होती हैं तो उनका क्या एडवांटेज होता है. ठीक है ना, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. पहले क्या होता है ये भी बताऊंगा, और फिर उनमें अगर सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही हो, उन ऑर्बिट्स में अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही हो तो उसकी क्या जो है वो एडवांटेज होता है. I'll explain that as well and then we'll move on to the questions. और फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा. ठीक है गर्ल्स, बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर.